Yo guys, what's up and welcome to the final episode of Scarlet Nexus. So पिछले एपिसोड में कारेन का फेज 1 का बॉस फाइट हमने खत्म किया था। तो एक्चुअली हुआ ये था कि सब लोग फाइनली सुमरागी टूम के एकदम कोर में पहुंचे। तो उधर उन्होंने देखा कि एक्चुअली दो कारेन है, एक वो कारेन जो याकुमो बन के कोल्ड स्लीप में था एंड दूसरा हमारे टाइमलाइन का ही कारेन, वो पास्ट में गया नहीं क्योंकि उसके पास रेड स्ट्रिंग्स की पावर्स जो थी वो कम पड़ गई। उसने जो यूइतो और कसाने से कॉपी की थी। तो होता ही है जब ये दोनों कारण मिलते हैं तो जो ये हमारे टाइमलाइन का कारण नहीं होता है वो ऑब्जॉर्व हो जाती है ये वाले कारण के अंदर जो हमारे टाइमलाइन का है। उसके बाद फिर हमें उसे हराना पड़ता है क्योंकि हम उसे बोलते हैं कि हमें कूनाट गेट बंद करने के लिए उसकी मदद चाहिए, उसका जो एंटेंगलमेंट बना है उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बट वो सुनता नहीं ऑब्वियसली। उसे लगता है कि मतलब जितने भी बार उसे टाइमलाइन डिस्ट्रॉय करना पड़े फर्क नहीं पड़ता, उसे एलिस को बचाना है ऐसा। फिर हम उससे लड़ते हैं। फर्स्ट फेज ठीक था, जैसे हम कारेन से पहले भी लड़ते सेम वैसे ही था कि वो अपनी अलग अलग पावर्स यूज़ करता है एंड फिर हमें उन्हें डॉज करके अटैक करना होता है, बस ऐसे ही था। उसके बाद होता ये है जब हम कारेन को हरा देते हैं वो एक अदर में बदल जाता है, अदर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड सेकेंड फेज चालू होता है जो अभी आप देखने वाले हो। अब इसको कैसे हराना है, इसका क्या पैटर्न होगा कोई आइडिया नहीं है। हाँ, ये फाइनल बॉस है गेम का, तो इसके बाद एंड ही होना ना, तो ये लास्ट एपिसोड रहेगा। So yeah, let's get started. Maybe it's his memories or feelings materializing in the real world. His brain thinks something as ominous as that. What? Great job, Tsugumi. This much power. There's no way Karin will come out of all of this unscathed. He's likely prepared for that outcome. Or rather, my brother thinks that करना क्या himself इसको? is just a pawn to reach his goal. अच्छा, कारेन भी लड़ रहा है लॉर्ड। ये मुझे लग रहा है कारेन नहीं है, कारेन का क्लोन है क्योंकि कारेन तो उधर लटका हुआ था। Yuito, you can do this. वो मुझे पता है बट कैसे करना है। That's right. No matter how many enemies there are, we'll crush them all. Yeah, and we'll all help to do it. Time to use this. Hey, here we go. ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो काइंड ऑफ उसी का सामान तोड़ के फिर उसी पे अटैक करना है। ओके, वो क्या रहा है इधर? ओ भाई, अच्छा ओके। We can hit Karin now. Let's go. Let me borrow this. Hey, take this. Let me use your power. Something's wrong with Karin. We should Alright. back off for now. पीछे जाओ, पीछे जाओ। अच्छा, तो ये बॉस फाइट मुझे काइंड ऑफ थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। हमें एनिमी के अटैक से बचना है, फिर उसी के अटैक रिवर्स करके उन्हें मारना है। ये अब कुछ अलग हो रहा है। ये क्या? Break that अबे crystal. I bet you could use it with your psychokinesis. Do what you want. वो बढ़िया। नाइस, ये इसका मास्क आ गया। कंट्रोल कर। Use this. मास्क को कंट्रोल कर। एक दो बार पकड़ना पड़ता है। चलो, नाइस हो गया। बढ़िया, नाइस। लेट्स गो। अब स्लो डाउन करके आराशी की एबिलिटी यूज करेंगे ताकि हमें Take it easy. Don't get cocky. I need your help. ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इसको मार सके। नाइस, इसका क्रश बार भी खत्म हो गया तो एक बोनस डैमेज दे दिया हमने।
Do it! Finish it! ओके I must train more. तो एक मास्क हो गया, 2 मास्क हो गया और 2 बचे, ठीक है। तो हम चारों को एक एक करके मारना है। चारों के अलग अलग अटैक पैटर्न्स है, तो उनमें फिर अलग अलग ऐसे एबिलिटी यूज कर रहा है। काइंड ऑफ काफी देखा जाए तो काफी बढ़िया बॉस फाइट है। ओ I भाई need to support the injured. Is everyone okay? You guys good? I feel better now. अरे यार ये तोड़ना था, शिट। ठीक है अब समझ में आया करना क्या था। I'm watching out for you. Okay, use it. Everything. Keep it up. What you broke before was a fake. क्या You हुआ? use my eyes. You can ओ find them ठीक है, ओरिजिनल वाला तोड़ना पड़ेगा। Good. Hey. अरे यार, ये थोड़ा टफ हो रहा है, टफ हो रहा है, टफ हो रहा है। ओरिजिनल वाला ये रहा। अरे उठ, अबे उठ। ठीक है मास्क गिरा अपना। Crush you. ओके इसका मास्क एक बार में नहीं गिरा, वो गिर गया, गिर गया। अरे यार I should charge. Use some power. चलो ये मास्क निकालते हैं यहाँ से और पटकते हैं इसके सर पे। तो अभी अगर आपको समझा ना हो तो वो जो चट्टान निकली है ना उसमें से बस एक ही ओरिजिनल था, तो मुझे सुगुमी की पावर यूज करनी पड़ी ये समझने के लिए कि ओरिजिनल वाला कौन सा है। Thanks, Arashi. Take this. Let me borrow this. Let's go. ओके आई थिंक ये बार में खत्म कुछ कर सकते हैं हम उसको, देखा जाए तो ऑलमोस्ट हो गया खत्म। नहीं या फाइनल मास्क को भी तोड़ना ही पड़ेगा तभी होगा। ओके फाइनल 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 ब्रेन फील्ड चालू करके मारेंगे आखिरी वाले को। इधर है लास्ट वाला मास्क, इधर है। अच्छा वो रहा, अभी इसकी क्या एबिलिटी है? अच्छा Thanks, Kyoka. Do what you want. I can do this. बढ़िया। ओके ये आसान था वैसे पिछले बार से, पिछले बार वाला थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने वाला था। बस अब कारेन हम पे अटैक करेगा। ये एक्चुअली कारेन नहीं है, ये उसका क्लोन है, देख रहे हो ना। बढ़िया लेट्स गो। ओरिजिनल कारेन को उधर बंद करके रखा है, मतलब काइंड ऑफ बंद नहीं है, वो कंबाइन हो गया वो अदर के साथ। किधर गया ये रहा। चलो ब्रेन फील्ड, बस अब पेल के इसको खत्म करेंगे। आजा। अरे लेट्स गो गाइस, फर्स्ट टाइम में हो गया ये भी। ये बॉस फाइट में पर्टिकुलरली हार्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी बढ़िया डिजाइंड था। मतलब हमारे पास जितने एस एबिलिटी थी, अगर 9 एस एबिलिटी है टोटल काबूरो की मिला के, उसमें से 7 से 8 एस एबिलिटी की यूज करना ही था कुछ ना कुछ रीजन से। Please do not stand up. You can't take any more. गामा का 100% यूज था, लूका का था, अराशी का था, सुगुमी का था, क्योका का था, Karin. I won't. कसाने का था। इन सब का तो 100% नीडेड था। और है क्या फेज 3 वगैरह? What is this? Everyone, be careful. Something's. What? ठीक है
अदर पार्टिकल्स तो नहीं पता चला, सब अदर बन गए। ये क्या है? अंधेरा अंधेरा क्यों है? Where is everyone? Kasane, answer me! Damn it. SAS and Braintalk are both offline. वन फाइट तो नहीं है कारण के to साथ? save you, Alice. I promise. ये वन फायर यार, 3 फेज का बॉस। What's happening? At this rate... No, calm down. Everyone is probably in the same situation as me, fighting somewhere. I can't let myself get scared now. अब मुझे बस अपनी एबिलिटी यूज करनी है। ओके, बॉस फाइट तो नहीं था, पता नहीं, आई थिंक ऐसी कट सीन ही है ये फिर। Damn. वन ऑन वन बिना पावर के तो हार्ड होगा इससे लड़ना। Even if I'm here alone, everyone's thoughts are connected to me. I'm not alone. I won't lose to a soul enemy like you. I'll protect you, Yuito. Guess you can't handle things without me. नाइस। मुझे अभी से पता है कि ये वाला कट सीन बहुत खतरनाक होने वाला है। कट सीन ही मतलब ये वाला बॉस फाइट। Shiden! हम मुझे पक्का सबके पावर्स यूज कर सकते हैं। I knew you'd be alright. बट हनाबी और शीडन को क्यों दिया इन्होंने साथ में? इनकी पावर्स कॉन्ट्रैडिक्ट करती है। The hero has arrived. ओके, Your eyes, Yuito. ये रहा ओरिजिनल वाला। बहुत बढ़िया। Thanks, you two. You saved me. You're the kind of guy who's done in here. Now let's do this thing. I'm sure everyone will be fine. नो डैमेज? अच्छा, इसको डैमेज नहीं कर सकते लग रहा। Don't get burned. हुआ। Get lost. I will stop my brother. I'll be your shield. Current. बढ़िया। Am I late to the party? Yuito, strike back. Let's go. How many times? I'm watching out for you. Everyone's okay? I can take it easy. I thought that'd be the case, but I sure am relieved. I'm glad to see you're okay too, Yuito. Damn, Karn is really causing some trouble with this. Watch the enemy. I'll help. Now that we're here, he won't be doing whatever he pleases. Right, Yuito? As long as we work together, we'll be fine. Yeah. I'm counting on बहुत all बढ़िया, खत्म है। everyone by my side. I can be so अब कौन बचा है? बस कसाने बची है क्या? वो लग रहा लास्ट में आएगी। कसाने का सीन ही नहीं है, उसके पहले ही हमने मार दिया इसको। I will never accept this world. How could I? I refuse to accept it! उस पे क्या गिरा? ऊपर से कोई, अच्छा मुझे लग रहा है जो उड़ता वो स्टोन था, वो कुछ गिरा उसके ऊपर। I made it in time. अच्छा, कसाने ने गिरा है, ठीक है। Kasane! मैं वही सोचा अपने आप तो स्टोन कैसे गिर नहीं I सकता। owe you, Kasane. You saved my life yet again. No problem. I mean, it does seem like I'm drawn to you whenever you're in a pinch. Always have been, right?
So it seems. अच्छा अब खत्म हो चुका है अभी और एक फेज वेज कुछ नहीं होने वाला. लेट्स सी द एंडिंग. फिर एंडिंग क्या होता है? अच्छा गेम की एक ही एंडिंग है, मल्टीपल एंडिंग्स वगैरह कुछ नहीं है. हाँ स्टोरी आप 2 व्यू पॉइंट से एक्सपीरियंस कर सकते हो, एक कसानी की और एक यूइतो की, बट एंडिंग एक ही है. Yuito. Let's do it. I'm never going to stop. Next time I will not fail! It's not just our power. It's all of our powers, working as a team, as one! Our bonds give us strength. ये अटैक देख के उसकी पटी तो होगी बच्चा. लॉस. वैसे देखा है तो कारण काफी ज्यादा पावरफुल. इतने सारे 9 कितने लोग थे? 8 9 10 11 लोग हैं टोटल. 11 लोगों से अकेले में लड़ना. Not like this. If I lose here, it will all have been for nothing. I have but one wish in this world, and it is denied to me. Give up. You fought and lost. We're done here. You don't have to keep doing this, Karin. Yes, I do. I can still... Karin! फुबुकी. जब सब खत्म हो गया तो आया है ये. Out of my way, Fubuki! Please! It's time to stop this. I never knew how much pain you bottled up inside. Damn you. Listen to me! Please, Karin. You've suffered long enough. I beg of you, put this burden down. Alice would never want you to torture yourself like this. Shut up! क्या हुआ? हमें दिखाया नहीं इन्होंने. यार मुझे लगा नहीं था फुबुकी पे अटैक करेगा ये. Karin, the world is cruel. But you have to find a way to live within it. थोड़ा सा अटैक This किया world बस. without Alice. You just have to accept it. You must. We both do. Live on. Live for her. ये सीन बहुत बढ़िया था. एंडिंग में से फुल एनिमे स्टाइल किया है इन्होंने. ऐसे एनिमी है देखा लिया है तो इसका पूरा एनिमे आया हुआ है. सेम स्टोरी है जैसे गेम की है. Please, we need your help. I'll ask you once again. Come to the Chronos terminal with us and unravel the entanglement. हाँ कोनाड गेट तो बचा है अभी. I know the pain of never being able to see a loved one again, so I won't ask you to accept it willingly. But I can't let you have your way. I don't want to destroy the future of this world. You went back to the past repeatedly, since no matter how hard you tried, you didn't get the result you wanted. Think of the people who care about you. End this for their sake. Join us.
Help us protect our future. Help us build a better tomorrow. So this is what they mean by the end. Then, that leaves me with only one choice. So you'll do it? I'll grant you your wish. However, are you sure you only want to close the Kunad Gate? You should have already realized its potential, Fubuki. You mean Yuito Sumeragi's plan to have the Kunad Gate consume the extinction belt? Oh, I see. We close the Kunad Gate, and at the same time take care of our other problem. But the plan my brother spoke of isn't feasible. I can't move the extinction belt with just my power. You mean our gravikinesis? He's right. Even with our combined efforts, we're not strong enough to do that. Use Arahabaki. If it's a biocomputer, then it might be possible to raise the cap of your powers by connecting your brains through the SAS. It is possible. Arahabaki has spent centuries running simulations. There shouldn't be a problem. अच्छा extinction belt जो है उसे भी You खत्म wanted to करने का. eradicate the extinction belt that turned Alice into an other as well. Will Yuito and Kasane's brains be able to withstand the extra output from Arahabaki? It's too dangerous. If there's even the slightest chance we can do it, we have to try. If it's theoretically possible, it's worth testing. Then let's get ready. We'll need to pull some strings in order to use Arahabaki. I'll look after Karin. We should head to the Kunad Gate. Does that make Karin my ancestor? Lol. नहीं, Karin इसका ancestor तो हुआ नहीं. इसने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि Karin टाइम ट्रैवल करके याकुमो सुमुरागी बन के इतने दिनों तक मतलब 2000 years प्रायर स्लीप में था ना, इसलिए इसने ऐसा बोला. I'll be right there. हो गया. अभी तो पूरा मुझे लग रहा है ये काफी बड़ा सा कट सीन ही है क्योंकि फेज 12 लास्ट था. अभी कुछ नहीं. But only because we're letting you. Don't make me regret this, Karin. यार Karin की बार कॉपी करना है. Don't worry. I'll close the Kunad Gate. Arahabaki is ready. Karin should be ready too. We're gonna connect through the SAS to help you while operating the link. ये तो इनका प्लान ये है कि सारा एक्सटेंशन बेल्ट Kunad गेट के अंदर डालने के लिए. We got this. Kunad गेट जो है ना वो एक ब्लैक होल काइंड ऑफ है, तो सारे एक्सटेंशन बेल्ट को भी अब्सॉर्ब कर Let's all लेगा. make this a success. This is going to tax all of you, but we need your help. I just know everything is going to work out. We can do it. We've been able to come this far because we've worked together. I've finished connecting Arahabaki. All right, let's start. Opening SAS connection to Arahabaki. This is Arahabaki's. लोग पूरे एक्सटेंशन बेल्ट को खींच के Kunad गेट के अंदर घुसाने वाले हैं. So much power. Feels like I'm going to black out. The extinction belt. It's
still not moving. I have to find a way to control this power. Just focus on the extinction belt. Give it your all. I'll take care of controlling Arahabaki. I've been connected to it for 2,000 years now. All right then, do it! Karen, we trust you. If you want to save this world, then show me the strength of your resolve. Kasane! Yuito! ओके ये रहे अदर पार्टिकल्स सब कुछ घुसा दिया कूनाड गेट के अंदर The extinction belt is getting sucked into the Kunad gate like we planned. Oh wow. The extinction belt is fading away. We did it. Thank you, Karen. The extinction belt's no longer a threat. From here, we can go directly to the Kronos terminal. Right. Keep your focus on the red strings. अच्छा अभी वो एंटेंगलमेंट भी तो डिस्ट्रॉय करना है. Now, finally, the last one. अबे वापस बॉस फाइट वगैरह तो नहीं है. Hey! Karen! I can't give up. Not after all these years. I'll go to the past and find a timeline where Alice lives. No! You can't! Hold on! I told you to show me the strength of your resolve. This time, I won't claim Yakumo's life. अच्छा. The final entanglement will be eliminated. Karen, but that... You're going to sacrifice your own life. अच्छा हाँ एंटेंगलमेंट एक डिस्ट्रॉय करने का तरीका वो भी है. One last jump through time. जो टाइम ट्रैवल करता है अगर वो मर गया दूसरे टाइमलाइन में तो भी एंटेंगलमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ये इस बार जा रहा है टाइम ट्रैवल करके. ये याकुमो सुमुरागी को नहीं मारेगा इस बार. एंड वो याकुमो का भी टाइमलाइन चेंज नहीं करने वाला, बस एलिस को बचाने का कोई तरीका ढूंढने वाला है एंड फिर खुद को सैक्रिफाइस कर देगा जिससे एंटेंगलमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड ये कूनाड गेट भी बंद हो जाएगा. ओके देखा जाए तो इसके कारण के ऊपर भी आप कारण को हीरो बना के भी एक प्ले थ्रू बना सकते हो इसकी स्टोरी का. मतलब उसके व्यू पॉइंट से उसने ये सब क्यों किया एंड कैसे किया वगैरह एक एक चीज. देखा जाए तो कारण से 1-on-1 में कोई भी दूसरा कैरेक्टर जीत नहीं सकता, उसे इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया है. Alice. I'm sorry, Fubuki. Take care of her for me. Red strings. वो क्या रहा है ये रेड? कारण ने एक्चुअली टाइमलाइन चेंज किया क्या? अभी तक टाइमलाइन चेंज नहीं हो रहा था. एक्चुअली देख रहे होंगे तो वो हर बार ट्राई कर रहा था बचाने का, लेकिन वो अदर बन जा रही थी एंड एलिस हर बार मर रही थी. उसीलिए तो इतने सारे कारणस दिखाए गए हैं 2000 ईयर्स से जो टाइमलाइन में जंप कर रहा है वो पास्ट में. बट आई थिंक इस बार वो मे बी सक्सेसफुल हुआ, इसलिए ऐसा दिखाया गया पूरा. Look, the Kunad gate. क्या हुआ? ओह गया कूनाड गेट. अच्छा कूनाड गेट गया तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल हो गया. अगर नहीं होता उसका मतलब यही कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड एंटेंगलमेंट अभी भी नहीं गया.
उसने एक्चुअली एलिस को बचा लिया, तो अभी एलिस जिंदा होनी चाहिए फिर। The Kunad Gate no longer seems to exist. Karen. Yeah. That flood of red we saw everywhere. That was the red strings, wasn't it? Which means... By traveling into the past, I wonder if we changed the world for the better. More than just the Kunad Gate closing, you mean? Oh. Sorry about zoning out there, guys. Not used to the sky being pretty. Good to go, Haruka? I've been good to go for a while. Hurry up, Wataru. We saved the world, didn't we? We didn't just prevent the future apocalypse. We eliminated the extinction belt, too. Thanks to Karen. We won. Yeah. He made a new future. All of us did. तो ये आखिरी चांस में उसने जो टाइम ट्रेवल करके गया, उसने एक नया फ्यूचर, मतलब एक्चुअली इस बार उसने टाइम लाइन चेंज की। एंड आई थिंक उसने पूरा काफ़ी बढ़िया टाइम लाइन चेंज किया कि ये जो भी बुरी बातें हुई थी, ओके, जो भी बुरी बातें हुई थी, एक्सटेंशन बेल्ट वगैरह, आई थिंक न्यू हिमुका रेजिमेंट वगैरह के साथ भी जो हुआ था, वो सब उसने ठीक किया शायद। ओके, लेट्स गो। तो पोस्ट क्रेडिट सीन है कुछ, जब तक पोस्ट क्रेडिट सीन आता नहीं है तब तक हम थोड़ा सा गेम के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन साथ में देखेंगे। अच्छा, तो स्कारलेट नेक्सस ये गेम जो है, ये उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिनको कॉम्बैट गेम्स बहुत पसंद है, जैसे डेविल मे क्राई हो गया, बायोनेटा हो गया, नियर रेप्लिकेंट पकड़ लो। तो इन सब के साथ जो कॉम्बैट काफ़ी फ्लूइड है, एंड इसका जो एक मतलब काफ़ी इन डेप्थ कॉम्बैट दिया है। आपको पूरा जो फाइटिंग है वो एज ए चेस आप बोल सकते हो, क्योंकि इतने सारे एबिलिटीज़ है। जैसे यूइतो की सॉर्ड की एबिलिटी 2 टाइप की है, नॉर्मल अटैक और एक उसका जो स्पिन स्पेशल अटैक। उसके अलावा यूइतो की जो ये वाली एबिलिटी, उसकी साइकोकिनेसिस एबिलिटी, उससे अलग अलग एनवायरनमेंट की चीज़ों से आप अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो। कुछ ज़्यादा पावरफुल वाली चीज़ है, कुछ कम पावरफुल वाली चीज़ है, एंड उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ है जो इस पर ऑयल या पानी होता है तो अलग अलग स्टेटस डाल देता है इस पर एनिमीज़ पे। इसके बाद 9 SAS मेंबर्स की एबिलिटी, हाँ 9 मेंबर्स है टोटल। तो 9 मेंबर्स की टोटल 10 मेंबर्स है, मैंने 11 बोला था शायद थोड़ी देर पहले, 11 नहीं है, यूइतो कसाने को गिन के, और इसके अलावा 8, तो टोटल 9 SAS मेंबर्स की एबिलिटी। अगर आप यूइतो होंगे तो आप कसाने की एबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, कसाने होंगे तो यूइतो की एबिलिटी यूज़ कर सकते। तो इन सब की अलग अलग एबिलिटी है। कुछ लोगों की सीधा सॉर्ड पे कोई पावर डालती है, कुछ लोगों की पैसिव पावर्स होती है, जैसे लूका और गामा की हो गई, जैसे आपको शील्ड दे रहा है या ये दे रहा है टेलीपोर्ट वगैरह। एंड कुछ लोगों की सम अदर अग्रेसिव पावर होती है, जैसे कसाने की हो गई, शिडेन की हो गई, बिजली की पावर वगैरह, ये सब। तो इसके अलावा जो एनिमीज़ आते हैं उनके अलग अलग वीक पॉइंट्स होते हैं, तो हमें ये तय करना पड़ता है कि किसकी SAS पावर सामने वाले एनिमी पे अच्छे से काम करेंगे, एंड उसे यूज़ करना पड़ता है। तो ये काफ़ी डेप्थ हो जाता है। उसके अलावा मतलब इसमें कॉम्बैट में इस सब के अलावा गेम की स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आपने पूरी देखी हो, ओवरऑल अगर कोई आप एनिम फैन हो तो भी आप इसे काफ़ी एंजॉय करेंगे। इसका एक पूरा एनिम स्कारलेट नेक्सस का अलग से आया हुआ है, मुझे लग नहीं रहा सारे एपिसोड्स आए, कुछ एपिसोड्स आ गए हैं 5 से 6। उसकी स्टोरी पूरी सेम है जो इसमें दिखाई गई है गेम की। तो पूरा डिटो स्टोरी है, एंड स्टोरी काफ़ी बढ़िया है गेम की। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बोलूँगा जितने भी 2021 में जितने गेम्स आए उनमें से। इससे पहले शायद मुझे एक रेसिडेंट इविल विलेज की स्टोरी अच्छी लगी थी, और एक अपना लिटिल नाइट वेस्ट 2, इन दोनों की स्टोरीज काफ़ी बढ़िया थी। इसके अलावा गेम का बैकग्राउंड म्यूज़िक ये बहुत बढ़िया था। अब कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं लगी वो ये चीज़ है कि गेम में मुझे कुछ जगहों पे ऐसा लगा डायलॉग्स बहुत ज़्यादा है, खासकर कि बॉन्ड एपिसोड्स में। बॉन्ड एपिसोड्स पर्टिकुलरली कुछ इतना खास होता नहीं है, 2 कैरेक्टर्स आपस में वगैरह बात करते हैं, थोड़ा लंबा होता है 5 से 10 मिनट का, बट उसे करना भी ज़रूरी है, हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो फिर आपका बॉन्ड लेवल नहीं बढ़ेगा। चलो, इसके अलावा तो मुझे कुछ और दिक्कत आई लग नहीं रहा। तो अगर आपको फाइटिंग गेम्स वगैरह पसंद है, फिर आप ये फुल प्राइस पे भी खरीदोगे जो 2K 2000 का है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको उतने शॉर्ट नहीं हो तो मे भी इसे सेल पे उठाओ, 1000 रुपीज़ वगैरह जब ऑफ रहेगा तब सेल पे काफ़ी सही रहेगा। ये सब के अलावा मैंने बताया, हाँ म्यूज़िक बहुत बढ़िया था, ये तो मैंने बता ही दिया।
फिर डायलॉग्स हो गए, ये सब ठीक है। हाँ, इसके अलावा गेम में कुछ उतना ज़्यादा नहीं है। देखने में फर्स्ट लुक पे ऐसा लगता है ओपन वर्ल्ड गेम है, बट ओपन वर्ल्ड वगैरह कुछ है नहीं, ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने लायक है नहीं। आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। बेसिकली जो सारे हर एक लेवल डिज़ाइन ऐसा है कि समझ लो एक स्क्वायर, फिर एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक स्क्वायर, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन। तो हर एक स्क्वायर में आप एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमीज से लड़ोगे, फिर वो स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करके नेक्स्ट स्क्वायर तक जाओगे। तो बस ऐसा ही है गेम का पूरा जो भी है। तो ये हो गया रिव्यू। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, आपने देखा ही है पूरा गेम प्ले तो आपने देखा ही है। उसके अलावा अगर मैं रिकमेंड करने को बताऊँ तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा जिसको भी, अगर आपको फाइटिंग गेम्स के ऐसे गेम्स की आदत ना भी हो तो भी इसको खेल के देखो, तो सही है। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, तो मेरी तरफ से थम्स अप है। तो चलो अभी फाइनल क्रेडिट सीन देख लेते हैं। एस्केप होगा, एस्केप। एक सेकंड, मुझे लग रहा है ये फाइनल ही है तो रोल आउट होने देते हैं। और कोई इमेज, अरे और है या पोस्ट क्रेडिट। Okay, so this is what we could find out. We'll need to do a more thorough investigation, but most of it coincides with the history we know. But there's... Major General Fubuki, we've received several reports from all areas that the extinction belt has dissipated. And the Kunad Gate suddenly disappeared. What in the world happened here? I'll send a detailed report later. First, we need to contact the new Himuka government. Fubuki! Alice आ गई। तो कारण ने एक्चुअली टाइमलाइन चेंज किया। Alice? What? Why are you so startled? Oh, you're with them too, Hanabi? ये हनाबी की आंट है एलिस। What? Alice. It's you. Wait. If you're here, then what about... Then... what about Karin? Karin? I don't know him. Do I? अच्छा, कारण से इधर रियलिटी से ही इरेज हो गया। तो मुझे लग रहा है बस ये लोग जो उधर खड़े थे बस उन्हें वो याद है। देखा जाए तो कारण को आप मेन हीरो बोल सकते हो गेम की। 3 months later from now, 3 months from now, okay. I was thinking of going to Kunad Highway tomorrow since it's ready. I'd be happy if you'd all join me. Okay. अच्छा, ये कट सीन ही चल रहा है। मुझे लगा ब्रेन मैसेज कहाँ से आ गया। तो ये 3 months के बाद का है। तो कारण ने टाइम ट्रैवल करके टाइमलाइन ऐसे चेंज किया कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि उसने टाइम ट्रैवल किया है एंड टाइमलाइन चेंज किया है। एंड उसके अलावा उसने एलिस को भी बचा लिया और फिर शायद खुद को भी मार दिया, जिस वजह से कूनाड गेट डिसअपियर हो गया। एंटेंगलमेंट नहीं बचा ना, तभी तो डिसअपियर हुआ। उसका मतलब वो उस टाइम ट्रैवल में जिया नहीं ज्यादा देर तक। एलिस को बचाया एंड फिर खुद को मार लिया उसने शायद। Sounds like a lot of fun. The article when it what comes preparation out. Should I make? Sure. I guess I'll join you. Oh, Yuito! पता नहीं उसने एग्जैक्टली कैसे किया होगा। मे बी स्कारलेट नेक्सस पार्ट 2 में कारण का गेम प्ले दिखाया शायद, या फिर एनिम में दिखाया, ये भी हो सकता है। ओ, ये क्या है? अरे सबसे बात, अच्छा कसाने पे मेन एक्सक्लेमेशन मार्क है। It seems that you and Kasane have something to do with the fact that we're the only people who realize that history has changed. हाँ, हो सकता है, क्योंकि रेड स्ट्रिंग्स की पावर हम दोनों के पास है एंड ये सब हमसे कनेक्टेड थे जब हम मतलब कूनाड गेट को बंद कर रहे थे, हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड थे ना। तो हो सकता है इसलिए इन सबको याद हो कि कारण कौन था एंड हिस्ट्री कैसे चेंज हुई वगैरह। When the world was altered, we were connected to Red Strings users through SAS. Yeah. So we became observers as well. Regardless, that time travel power is incredibly strong. If history was going to change, it could have made someone else head of PR. You do seem pretty busy lately. You're booked for constant interviews, so you don't have time to slack off. If you understand, then take over for me.
I really am going to quit being the PR person. I mean it. You say that now, but the fact that you're going to keep working in the OSF means that you're worried about Major General. Oh boy. You really do have some obsession about siblings. How many times do I have to tell you I don't care about my Obsession. Well, I'm a younger brother, so maybe I want to... Are things not going well with former Chief Kaito? The thing about family and siblings is that you can't cut ties that easily, even if you hate them. And sometimes, those ties aren't cut when you thought they were. You know what I mean, right? So sometimes it works out, sometimes it doesn't. I see. Those are some grim prospects. Yours aren't as complicated as mine. So you should help out Major General Fubuki. When the timeline changed so that Alice was alive and Karin never... When the timeline changed so that Alice was alive and Karin never existed, I think it's been tough for both Luca... Good grief. Are you trying to say that since you're a younger brother, you understand people who have older siblings who make their lives difficult? Well, more or less. I'm sure you didn't need me to point out... You're such a dreamer. We don't have anything like that. Besides, he decides how he wants to handle... I may be his sister, but it's not my place. I see. Yeah, you're right. God, you never change. You're frustratingly good-natured. You know, you should be worrying more about your... Really? But that is also your strength. It has to be exhausting. No, don't worry. I don't plan on quitting the OSF for now. There's a lot of benefits to a stable job once you learn all the tricks to slack off. Okay, got it. You're staying because of Major General Fubuki. So you're going to pretend you didn't hear me. You might actually have... ओके तो सारे कैरेक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ डायलॉग है एंड ये काफ़ी बड़े डायलॉग्स होने वाले हैं एटलीस्ट समझ लो 20 मिनट यही लगेगा लेकिन क्योंकि ये फाइनल एपिसोड है हाँ हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं These cherry blossoms are as beautiful as ever. कुछ जो भी सबटाइटल्स हैं हम थोड़ा स्किप करके सबके डायलॉग्स मेनली देख लेते हैं एंड फिर फाइनली कसाने से बात करेंगे ताकि फिर हम गेम को रैप अप कर सकें Even though history changed, Seto and Nagi. I'd be lying if I said I wasn't hoping for a miracle. Anyway. I'm fine right now. I can still use my power. You're always worried about other people. You're still the same. What? That was such... You took me in after my mistakes. I'm grateful to you too. You were always safe. Also, I think you and the others guided me. So, I guess that means we found a path we could... I see. Maybe Yuito Platoon felt so nice because you were the... You could call it a family. I don't have any family left, but the warmth I felt in the Yuito Platoon... Family? I'm basically the same age as Chairman Sumeragi. No, but your body is still young. You just... Right. I still have a lot of life. Don't make it sound like a chore. You have to ease up. Oh, right. We should go to that gyoza place again. I registered... You too? I actually registered on the app as well. Okay, let's go. Okay, इसके साथ छोटा सा डायलॉग ठीक है तो गाइस हम सारे कैरेक्टर्स के डायलॉग एक एक करके देखने वाले हैं अगर आप चाहते हो कि कसाने की एंडिंग देखो मतलब ऑब्वियसली कसाने के साथ फाइनल डायलॉग करने चाहिए हमें तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना लेकिन क्योंकि ये फाइनल एपिसोड है तो मैं रैप अप कर रहा हूँ सब कुछ I'm sure the animals are happy the extinction. We have to put the hideout's potted plants outside sometimes. So, did you help with the hideout's plants? Oh, yeah. Sometimes I put them out, give them water and nutrients. Was that bad? No. I'm glad you took care of them, even with everything. It's because I took what you taught me seriously. The spathiphyllum buds are getting pretty big. I'm glad. Yeah, I'm just glad that they can bloom. That's not it. I was... What? Oh, you mean... Yes, I was a little worried. That decision was about parting with the OSF. But you still came with us. Thanks. I need to thank you. You became my friend.
You're making me... I wish I could be in Yuito platoon forever. Yeah, I'm sorry. I won't be able to stay in the OSF if I lose my powers. And It's important to do what you want. It's a little unfortunate. of course... You're like the sun to me. What? Because plants need... Even if you leave the OSF, I know you'll be working hard somewhere. Then you're like the soil to me. The land, earth. Let's have a competition to see ओके तो यूजुअली मैंने नोटिस किया है जब भी हम बात कर रहे हैं तो डायलॉग्स में किसी भी कैरेक्टर के साथ ज़्यादातर हम बॉन्ड एपिसोड्स में जो किया ना, बॉन्ड एपिसोड ज़्यादा मैंने डाले नहीं है प्ले थ्रू में, इसलिए मुझे पता है सिर्फ कि बॉन्ड एपिसोड्स में ये लोग जो करते हैं, जैसे गामा के साथ ग्योका कोई होटल के बारे में इन्होंने बताया कि हमें उधर जाना चाहिए, तो बॉन्ड एपिसोड जब कर रहे थे तो उधर गए थे। सुगुमी के साथ ज़्यादातर अलग अलग प्लांट्स के बारे में बात की थी बॉन्ड एपिसोड में, तो वही प्लांट के बारे में। अराशी के साथ बॉन्ड एपिसोड्स में यूजुअली फुबुकी के बारे में ऐसी सब बात की थी, तो इसलिए वो उनका जो डायलॉग्स थे वो फुबुकी के बारे में थे। अब इसके साथ तो कोई maybe I would apply for the Lunar Surface Survey project. I want to see how people lived on the moon. अच्छा, इसके साथ तो कोई बॉन्ड एपिसोड नहीं था। Then maybe I'll sort of understand what Togetsu was. Telepathy probably won't reach here from the moon. I wonder if Wataru will cry because he misses me. Even without my power or SAS, I'm still connected to my brother and everyone else. अच्छा, हारुका एंड वातारू जो है ये वो वाले लोग थे जो कम्युनिकेशन ट्रांसफर करते, एक मतलब एक ऐसे पर्सन से दूसरे पर्सन से ग्रुप के। तो वातारू यूइतो के टीम में था स्टार्टिंग से एंड हारुका कसाने के टीम में थी। अगर आप कसाने बन के खेलोगे प्ले थ्रू में तो हारुका स्टार्टिंग से आपके साथ रहेंगी। तो इनके साथ कोई बॉन्ड एपिसोड्स वगैरह नहीं थे, इसलिए इनके साथ कोई स्पेसिफिक डायलॉग्स भी नहीं थे, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से। Cryogenic sleep chambers stopped functioning when Babe went. My old associates were taken into custody by the government. Well, they can't do anything. I'm in a pretty bad spot, too. Well, I guess it's obvious they're suspicious of me as well. There's also the thing with Chairman Sumeragi. I'm on release without indictment, hunting others for now, but... I see. Don't look at me like that. I know you want to say I want you to pay for what you did, but I don't feel smug about it. Don't you find it hard to live with that I managed to make it to 16 like this, so no. That's true. So what are your plans now? I'll retire. I won't be able to stay in the OSF if I lose my powers. Then come visit me if I get thrown in prison. I'd like to know how things are going and how... Okay. My brother might get caught too, so I can visit you when I visit him. Hey, am I just an after... I'm kidding. Besides, Major General Fubuki said that your sentence would be lighter because of everything you did. That's why instead of worrying about what will happen when you're caught, you should worry about what you'll do after. After that? I'm sure I'll be discharged from the OSF. I heard the Lunar Surface Survey project will be going forward, so... No, it's still a little too hard to go back home to the moon. I'll probably just stay here and... I've been on Earth for a while, but I've done so much lying in my life. It might be good to finally... Then teach me... Why me? Do I look like... Weren't you the commander of the colonists? I looked it up after Kasane told me. You're actually really good at... Oh man, it sucks to have so much info. Well, I'm tired living a life of lies. It might not be... ओके सो बेसिकली वही कैरेक्टर्स के बॉन्ड एपिसोड में जो जो होता था उस चीज़ के बारे में एंड फिर वो फ्यूचर में क्या करने वाली इस बारे में। तो यूई तो बार बार ये बोल रहा है कि वो ओएसएफ छोड़ेगा क्योंकि प्रॉबेबली उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यूई तो पहले एक डड हुआ करता था एंड उसकी जो भी पावर्स है वो एक्सपेरिमेंट से डाली गई है, तो इवेंचुअली वो वीक होके खत्म हो जाएंगी। Alice is alive. This is what Karin wanted, though it is only in hindsight. या लूका कारेन का छोटा भाई है, अगर आपने मिस किया हो तो। I believe it was wrong, but I think I felt his thoughts for a moment at the end there. I don't agree with him. But for now... By the way, did you have your brain examined? Yeah. My power was acquired, so they said I have a very high chance of... Okay. I see. Don't look so down. I said I don't care about it. You really are strong. I must bolster myself so I don't fall in. You climbed the mountain with me, so I can't look glum in front.
You don't have to pretend to be... I know, and I appreciate that. However, I want to push my limits here. The fact that my brother vanished is confusing. Karen के इन्होंने grave Whatever बना this दिया. world is now, I did have a brother. If this is the world my brother wished for, then I want to watch over it. I want to be strong for that. Yeah. Even if Karen was the one who created this current timeline, it's up to us. Are you planning on retiring from the OSF? Nothing gets past you. I've already put in my request. I'll be back to being a civilian after I take care of a few things. I can't stay in the OSF if I lose. Even if you didn't lose your power, I think in order to protect this country differently from the OSF. You think so? You might be right. Yes. We will both do what we can to create a better... I want to use this given power to carry out my duties, and even if it was given to me, I've come to terms with the many parts that make me who I... You truly are a Septentri. I'll keep doing my best, too. We might be going about it differently, but I'm sure we're striving for the same future. Oh, it is important to maintain your physical health after your retirement if you're going to accomplish something significant. I can help you come up with a training... So that part of you hasn't changed. You really are amazing. लूका को हमेशा बस जिम करते रहना था ट्रेनिंग, तो उसी के बारे में थोड़े से डायलॉग्स थे. तो अभी शीडेन वातारू और क्यों का वातारू का खत्म करते हैं. We know only exists in our heads, right? थोड़े से लाइंस होंगे इसके We बाद. should make a memorial before. I'm gonna write down the history that we lived in a historical novel. It'll just be fiction to the rest of the world. I'll need your help too. Of course, I'll do everything I can to support you when you need as well. Even if you quit the OSF, that won't change. This is just between us, though. ओके तो हारुका मून पे जो भी मतलब मून पे डेटा वगैरह कलेक्ट करना चाहती है, मून के लिए काम करना चाहती है वहाँ पे जाके. एंड जो वातारू है ये जो पुरानी हिस्ट्री है जो भी चेंज हो चुकी है उसको ऐसा फिक्शन नोवेल बना के लिखना चाहता है. ठीक है. This history, it wasn't Karen that started a rebellion with Seiran, but another OSF soldier. Okay. He's a known veteran, and I recognize his face. But I don't think he's an equal to Karen. However, history is taking almost the same path. It's something that's beyond human comprehension. Oh yeah, I heard you've been having some trouble. The crows are all... It's my family. Now that Kaito is out of the government, the press has turned on him and are just saying whatever they want. Since I was part of the operation that got rid of the extinction belt, they've been hounding me. It's... That's true, but you have the advantage of being a Sumeragi. Public opinion and the press just latch on to what's easy to understand. Most people don't try to see what's really... Oh, are you actually worried about me? That's not what I meant. I was just checking because it wouldn't be good if it got in the way of our missions. I'm fine. It's not like I'm being chased around by the crows all day, every day. Things will settle down eventually. शीडन वैसे सबके लिए अच्छा ही चाहता है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता. I see. If you retire, you'll be a civilian. Weak. You don't change, do you? Though you're right. I won't be able to go watch the thunderclouds outside the city. Apparently, New Himuka's climate changed after the extinction. We might get a chance to see lightning up close again. I wouldn't be opposed to taking you. You can thank me later. Wow, conceited much? It would be nice to see them with you. या एक बार हम शीडन के साथ लाइटनिंग स्टॉर्म देखने गए थे तो उस बारे में ये लोग बात कर रहे थे. Yuito, Chairman Sumeragi, your father, the sins of Togetsu didn't change either. I hope I can help with the dismantling of What are you going to do? I heard you were Oh, you heard already? Of course. I was the leader of Kyoka platoon, so I'll hear things amongst the command. Right. For now, I'd like to do some... I also have to clean up the scandals around this... Oh, then I might be able to help you. Huh? I also plan on retiring once things calm down. Okay. Since I'm testifying to what Togetsu did, it would only cause trouble if I stay. I see. I guess that's what it means to bring what Togetsu...
If I leave the OSF, there won't be anything tying me down. I think I can also convey the efforts Chairman Sumeragi went through to protect New Himuka. But why? Even if you feel responsible for Togetsu... Is Wakana being happy not a good enough reason? My mom? You mean when you were monitoring my mom? Yes. Chairman Sumeragi certainly took part in some inhumane activities. Even if it was allowed politically, he can't be forgiven. But that's not everything Chairman Sumeragi was. He got in the way of He was assassinated because he tried to protect New Himuka from Togetsu. The chairman's merits and demerits should both be made public. That should be detailed in Togetsu's... I didn't think anyone would look at it that way. I'm glad. To be honest, I was a little... Because some people say the Sumeragi family was controlling New Himuka for their own interests. My father and brother did some horrible... That shouldn't be all. It should all be brought to light. Thanks. Even if it's the hard truth, I'll face it. ओके तो आपको पता ना हो तो क्योका एक डिज़ाइन चाइल्ड थी जो तोगेत्सु ने बनाया था एंड काफ़ी सालों तक वो स्पाई थी तोगेत्सु की एंड उसने सुमुरागी फैमिली यानी कि यूइतो उसके मॉम डैड इन सब पे नज़र रखा हुआ था। तो उसका बोलना है कि जो भी उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए जो भी हॉरिबल चीज़ें वगैरह की है इस सब का डेटा है उसके पास एंड उसके बारे में इसको पता है तो ये उन सबको एक्सपोज करने में यूइतो की मदद करेगी ऐसा। Aunt Alice is really nice, but there are still times I just don't know what to say to her. एलिस इसकी आंट है जो मतलब कारण ने जिसको बचाया वो। Oh, my mom and dad left a message. They told me to invite you for dinner. Food tastes better when you eat with friends. It's just like when we were... Oh, I heard you put in your resignation. Yeah, I made up my mind. Once everything calms down and the OSF is back to business as usual, I plan to retire. So it's really true. Well, I'm sure there are so many things you still want to do. Do your best in your new life. I'll do my best in the OSF. I guess, well, we should both do our best. Okay. I guess that's a good summary, but you're right. I mean, I feel safe leaving the OSF in your hands and not... Really? I'm not good enough to say that you can count on me, and there are so many obstacles I need to overcome. But I'm confident that I won't give up. I know. It's not easy trying to live up to your ideals, but I know you can. Thanks. Just watch. I'll prove I can. And I'll be watching you too. Yeah. Oh! I can't say yet, but be ready, because I will tell you someday. Once I become the person I want to be. What do you mean, be ready? I don't really understand, but I'll be waiting until you say it's time. ओके सो हाना भी ओएसएफ में ही रहने वाली है। यूई तो रिटायर होने वाला है। कुछ लोग जो इधर नहीं है वो सेटो जो हमारे कैप्टन थे एकदम स्टार्टिंग में, उसके अलावा नेओमी जो कसाने की बहन थी एंड फिर एक और था नागी जो इसका फ्रेंड था जिसके पास एयर की पावर थी। तो ये लोग काइंड ऑफ साइड कैरेक्टर बोल सकते हो क्योंकि इनके पावर्स हमने खुद कभी यूज़ किए नहीं है, तो इनको एक्चुअली स्टोरी में इधर उधर मारने के लिए बनाया गया था, इसलिए वो लोग की पावर भी हम कभी यूज़ नहीं कर पाए। नहीं तो हम उनकी पावर भी ऐसे ऐसे यूज़ करना चाहिए था बट यूज़ इसलिए ही नहीं कर पाया। Major General Fubuki is late. Maybe we should contact him. ओके ये फाइनल कट सीन होने वाला गेम By का। the way, don't you want to talk to everyone? बात कर तो लिया और किससे? उन दोनों से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर लिया सबसे, और कौन बचा? No, I'm good. तो गेम में अलग से दिया है कि आखिरी चांस से बात कर लो Sorry करके। for keeping everyone waiting. When's the last time everyone got together like this? I'm glad to see nobody's changed. It hasn't been that long. I've been so busy I actually lost track of time. Man, I need a break. That makes sense since you've had to deal with the media every day. Seriously, good work. It appears there hasn't been much change with the others in this area. While new others haven't appeared since the extinction belt dissipated, it's not like the ones already here just suddenly went away. Yeah. Looks like I won't be retiring anytime soon. That's right. We need to keep protecting everyone. I heard they're going to change the other reports to a system that tracks them on the
It looks like things are going to start changing around here, little by little. All right, let's do what we came here to do. अच्छा किस लिए आए थे ये लोग इधर? अच्छा कारेन की ग्रेव पे ऐसे कोमेमोरेट करने के लिए I want to thank everyone for coming today to honor him. Yeah. So we're the only ones who remember Karen. The world changed, but we weren't affected by it. Erasing his own existence like that? I never would have thought he had it in him. Maybe it was the price to change the world the way he desired. Although I'm sure he doesn't look at it as paying a price. Why do you have to go off and make me an only child? He will exist as long as we remember him. We know that he was here in this world. मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कारेन ने किया क्या. मे बी स्कारलेट नेक्सस 2 में ये बताया कारेन की स्टोरी हमें. इसने टाइमलाइन कैसे चेंज किया. I wouldn't mind taking out a few others around here on our way out. Such the diligent soldier. Who in their right mind asks to do more? Yuito. How are your powers? There haven't been any big changes so far. I'll stay in the OSF a little while longer, then retire once everything calms down a bit. And after that? Well, I've got a lot on my mind in terms of what I want to do. It might sound conceited, but I want to change the world so duds like me have a place in it. I'd also like to face what my father and brother have done. I'm a member of the Sumeragi family, after all. And there's the other particles. Other particles? Yeah, but it's originally from space, right? It could appear again someday, since we didn't get it at the source. That's why I think we should study the other particles more closely, so we can eventually prevent, or even cure metamorphosis. I had no idea you had so much on your mind. Does that mean you're going to get involved in politics? Sounds that way, huh? Although, I'm not really cut out. Really? From what I've seen of you lately, I bet you'd be good at it. What, really? I don't know if it'll suit me, but I'm thinking about going to college. Oh. I want to study politics, and not because of who my dad was. I want to change New Himuka. You've made your decision too, haven't you? Yes. I've decided to go. There. Moon pe. To the moon. We'll be pretty far away from each other. But at least I can always look up at night. Every one of us is born alone. But even though we're alone, we can connect with each other. Where we are doesn't really matter. Kasane, I'll keep living, no matter what. ओह खत्म हो गया. What an ending. Nice. The last में जो इन्होंने छोटा सा सेगमेंट किया वो रेड स्ट्रिंग्स वाला. ओके गाइस, तो फाइनली खत्म हो चुका है. सेव क्लियर डेटा. ओके, इधर सेव कर, इसको इधर सेव करते हैं, खत्म करते हैं. ओके, तो मुझे लग रहा है इन्होंने ये ऐसा लाके इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि मे बी ये लोग स्कारलेट नेक्सस 2 अगर बनाना हो तो बना सकते थे, इसलिए. अभी जो है बेसिकली ये हुआ कि क्या लिखा है, ऑब्टेन फैंटम आर्ट फिनिक्स एंड मॉड डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सचेंज फॉर द आइटम्स एट शॉप. ओके, तो कसाने अभी मून पे जाने वाली है एंड यूई तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके, कॉलेज कंप्लीट करके वो पॉलिटिक्स में उतरने वाला है क्योंकि उसे मतलब आपको पता है न्यू हिमुका रेजिमेंट वगैरह कितनी मेस्ड अप है, तो वो ये सब ठीक करना चाहता है. तो अभी स्कारलेट नेक्सस 2 बना के कसाने की स्टोरी दिखाई कि मून पे क्या हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा तो लग नहीं रहा कि अब यूई तो के साथ कुछ भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसकी पावर्स जाने वाली है, नो पॉलिटिक्स में उतरने वाला है, तो कुछ भी हो
मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा। एक्स न्यू गेम अनलॉक्ड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ही है, व्हेन यू क्लियर द गेम विथ यूइतो और कसाने, एक्स न्यू गेम विल बी एडेड टू द स्क्रीन, यू कैन स्टार्ट द गेम अगेन मेंटेनिंग योर लेवल्स एंड आइटम। Also, when the game is cleared, save data is loaded, you will restart from the hideout. There are more quest givers in each area and you okay side missions वगैरह के बारे में लिखा। या तो अगर आप चाहते हो तो आप कसाने का भी मतलब प्ले थ्रू कर सकते हो। गेम में 2 प्ले थ्रूज है, दोनों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स। जैसे कि अगर आप कसाने बन के खेलोगे तो एंडिंग तो यही होने वाली है, एंडिंग में कोई चेंज नहीं होगा, बट स्टोरी के जो भी प्लॉट्स है, सेगमेंट्स, वो सब अलग अलग होंगे। कसाने की व्यू पॉइंट्स होंगे, वो जो फ्यूचर की यूइतो से मिली थी, फिर नेओमी जो अदर बनी थी उसका क्या हुआ, ये सब अगर जानना है आपको तो आपको कसाने का प्ले थ्रू करना पड़ेगा। अच्छा, मैं खेलने वाला हूँ कसाने का प्ले थ्रू, लेकिन फिलहाल तो नहीं। फिलहाल ये यूइतो का ही जो सेगमेंट था ये काफ़ी बड़ा हो गया कसाने का। मे भी इन फ्यूचर में कभी उसका मैं वॉक थ्रू बनाऊंगा जी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। एंड एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया, फाइनल एपिसोड था 1 आवर क्रॉस हो गया। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन अ न्यू गेम। चेरनोबिल चल ही रहा है। अगर आपको अच्छा, आपको स्टेल्थ गेम वगैरह जो थोड़ा सा हॉरर वाइब्स है, हॉरर आरपीजी सर्वाइवल, तो वैसे गेम्स पसंद है तो आप चेरनोबिल चेकआउट कर सकते हो। एंड अगस्त 2 को ग्रिम रिलीज हो रहा है। ग्रिम एक सोल्स लाइक मेट्रॉइडवेनिया गेम है, इसका हमने डेमो भी खेला था चैनल पे, तो उसके भी आपको एपिसोड्स अगस्त 3 से देखने को मिल जाएंगे। अगस्त 2 या नहीं, हमारे यहाँ आते आते अगस्त 3 हो जाते हैं इंडिया में, इंडियन टाइम लाइन के हिसाब से। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अ न्यू गेम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।